Good morning, students of class 9. Today we are going to discuss some important theorems of chapter 6, lines and angles. So here we are having theorem number 6.6 from NCERT, and this theorem states that lines which are parallel to the same line are parallel to each other. That means if two lines are parallel to a same line, then they are parallel to one another. That means let us suppose we are having three lines, line L and M and N. Okay, we are having three lines, and this is mentioned that lines which are parallel to the same line. Suppose line L is parallel to line M, okay, and line M is parallel to line N. So we have to prove that L and N are parallel to each other, isn't? So what is given to us? We have given that L is parallel to M and N is parallel to M. And what we have to prove? We have to prove L is parallel to N. Now we are seeing that how we can prove that L is parallel to N. So to prove L parallel to N, we are going to use the properties of parallel lines. So students, if line L is parallel to M, then we can say that angle 1 will be equivalent to angle 2. How? Because by corresponding angle. These are the corresponding angles of parallel lines. Therefore, angle 1 is equivalent to angle 2. And this one will be our equation number 1. Now students, similarly, if M is parallel to N, therefore we can say that angle 2 will be equivalent to angle 3. And again, the reason is same, corresponding angle, and this one will be our equation number 2. Now, if you students see that the equation 1 and 2, on comparing 1 and 2, we will get that angle 1 is equal to angle 2 and angle 2 is equal to angle 3. Therefore, all angles, that is angle 1 is equivalent to angle 2 is equivalent to angle 3. All angles are equal. Okay, and from this we can conclude, student, that angle 1 is equal to angle 3 because all angles are equal. Therefore, 1 will be equal to 3. Now student, if you can see that if angle 1 is equal to angle 3 here, then this will be possible that L is parallel to N because these are the corresponding angles of two lines. If the corresponding angles of two lines are equal, therefore lines will be parallel. So we can say that angle 1 and angle 3 are the corresponding angles of line L and N. Therefore line L is parallel to line N. Now theorem 6.7 states that the sum of the angles of a triangle is 180 degree, or it can also state that prove the angle sum property of a triangle. Okay, so we have to prove that sum of the angle 1, 2 and 3 is equal to 180 degree. That's what we have to prove. And what is given to us in the statement that a triangle, that is triangle PQR. We have given a triangle. So we are having a triangle PQR which is given, and we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Now student, to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree, we have to draw a construction. We have to make a construction, and what we have to do in the construction is we have to draw a line through P which is parallel to QR, and the name of the line is AB. So this is what we are doing in our construction, that AB line passes through P and such that AB is parallel to QR. ओके, हमने एक लाइन ड्रॉ करी P से जो कि AB नाम की लाइन है जो कि QR के पैरेलल है. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि लाइन AB पैरेलल है QR के, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 अगर हम लोग की PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है. देखिए AB कंप्लीट पैरेलल है QR के, और अगर PQ ट्रांसवर्सल हुआ तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप बोल सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर मैं PR को ले लूँ अपनी ट्रांसवर्सल, तो क्या इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के. अगेन द रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इस तरीके से हम लोग की ये दो चीज़ें निकल के आ गई हैं कि एंगल 2 तो इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट वी न्यू इज angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. Why students? Because AB is a line, and you know that this linear pair comprises angle 4, angle 1 and angle 5. So the sum of the angle 4, angle 1 and angle 5 will be 180 degree
The reason is simple, it is a linear pair. Now students, as we have proved that angle 4 is equivalent to angle 2, so I'm going to put the value of 4 as 2, and angle 3 is equivalent to angle 5, so I'm going to put the value of angle 5 as angle 3. Okay, so in this equation I'm going to put the value of angle 4 as angle 2 and angle 5 as angle 3. So we will get angle 2 plus angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree, and on adjusting we will get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree, and that's what we have to prove, student, that sum of the angles of a triangle is 180 degree. So this is our theorem number 6.7. Now we are moving to theorem 6.8. Theorem 6.8 states that if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. So, or this statement can be as prove the exterior angle property of a triangle, कि बाहर वाला एक एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वलेंट होता है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट एंगल 4 इज इक्वलेंट टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये हमें प्रूव करना है. अच्छा, गिवन क्या है? गिवन हम लोग को सिंपल ये है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बिकॉज इट इज मेंशन कि एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इज गिवन टू अस एंड वी हैव नेम द ट्राइंगल एज ट्राइंगल पी क्यू आर. एंड क्योंकि हम लोग को एक एक्सटीरियर एंगल भी ड्रॉ करना है, तो हम लोग को ये भी गिवन है कि यहाँ पे जो एंगल पी आर एस है वो एक्सटीरियर एंगल है. दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, क्यू आर को एक्सटेंड करना है एस तक, और जहाँ पे कि एंगल 4 जो हो गया हम लोग का एक्सटीरियर एंगल हो गया. दैट्स व्हाट वी हैव गिवन. नाउ प्रूफ जो करना है वो क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. चलिए प्रूफ देख लेंगे हम स्टूडेंट्स का. कैसे प्रूफ करेंगे? आपको पता है 3 + 4 जब हम करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. सो दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 1. एंड सिमिलरली हम लोग यूज करने वाले हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो हम इसे भी यूज करने वाले हैं. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के इक्वलेंट है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 के स्टूडेंट्स इक्वल है. तो जिनके राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होते हैं, देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ऑल्सो इक्वल. ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी विल गेट देयर लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल. दैट मीन्स हम लोग को मिल जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. कैसे आया स्टूडेंट? जिनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी होते हैं, यानी कि वाइस वर्सा भी ट्रू होगा. जिसके राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे ही. तो 3 + 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये हम लोग को मिल गया. अब देखिए, चाहे तो आप डायरेक्टली यहीं इसी स्टेटमेंट में इस इक्वेशन में अपने एंगल 3 को एंगल 3 से कैंसिल कर दीजिए. अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप अगर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो इस एंगल 3 कोई पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तब जाके आप इनको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग का फाइनली जो भी है, अगर आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप इस तरीके से उसे राइट हैंड साइड में लेके जाइए और तब कैंसिल करके दिखाइए. तो फाइनली जो हम लोग को मिल जाएगा वो मिल जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. ये तो प्रूव करना था हम लोग को कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. सो एंगल 4 इज हियर इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. Now students, we have completed our exercise of all the exercise of chapter number 6, and now we are going to start our next chapter in the next video. That's all. Thank you so much.